Today we will study logic families. We have already studied logic gates. You are familiar with logic gates. Logic gates are switching circuits which perform logic operations like NOT and OR. Logic families are the technologies to implement those switching circuits. So there are different logic families, means there are different technologies to make such switching circuits. त हिकिड़ी जेका टेक्नोलॉजी आहे उन जो नालो छा आहे TTL. TTL stands for transistor logic. Other family is ECL, emitter coupled logic, and other is MOS family, metal oxide semiconductor, in which you use two types of MOS, PMOS and NMOS. So there is technology which is PMOS and there is technology which is NMOS. So two types within MOS. And then there is a technology which uses both PMOS and NMOS. So that is CMOS, complementary metal oxide semiconductor. And you know already a 7-4 family of ICs, logic ICs. So 7-4 family like 7400 we discussed already. 7400 chao NAND gate, 2 input NAND gate, and so it's complete 7-4 series of logic gates. That is also, you know, TTL, that is also CMOS. So for example, if you have IC number 7400, that will be TTL IC. If it is 74S00, again it will be TTL. 74LS00, that will be TTL. 74AS, LS, so these, and 74F, these are subfamilies of TTL. And then there are subfamilies of CMOS also, 74C, 74HC, HCT, so these are CMOS families. Within MOS you have these things, you know, but you know, nowadays you use only TTL and CMOS. They are the most popular two families, CMOS and TTL. This is NAND gate of CMOS technology. Now CMOS technology, you see, this is PMOS and this is NMOS. So there are two types of transistors which are complementary. Upper side uses one type and the lower side uses other type. So it is called complementary symmetry metal oxide semiconductor. This is NAND gate. It uses 4 transistors, and this is also a NAND gate. It uses 3 transistors, but these 3 transistors are BJT. This is called TTL. This is the technology which is called TTL, and this is the technology which is called CMOS. You know, these both are NAND gates. Both use different transistors. This uses BJT. This uses PMOS and NMOS both. But you know, we are not aiming to study these circuits. We will not be understanding, you know, how do they work. I'm not interested in telling you the operation of these circuits. This is only meant to make you familiar with the technology, that there are two major types of families used today, two different kinds of technologies to implement logic gates. So we will be familiar with these technologies in terms of what kind of transistors they use and what are their characteristics. So we will see their electrical characteristics, and in electrical characteristics, you know, तव्हां छा पढ़ियो आहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में? एम्पलीफायर पढ़िया आहिनि? Yes sir. Yes sir. एम्पलीफायर में तव्हां कहिड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िया आहिनि? एम्पलीफायर जा कहिड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स हूंदा आहिनि? इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनीवन? Sir, input impedance, output impedance. सही आहे, इनपुट इंपीडेंस हूंदो आहे, आउटपुट इंपीडेंस हूंदो आहे, ॿियो छा हूंदो आहे? Sir, gain. Gain हूंदो आहे. Similarly, we will see the electrical characteristics of logic gates. So their input output characteristics, like for example, one is called fan in, other is called fan out. Power dissipation, how much power they consume, and noise margin, and timing characteristics. So there are two things, you know, electrical characteristics and timing characteristics.
टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में छा खबर पवंदी है त how fast is the switching, how fast is the switching. त पहिरीं पाण छा पढ़ंदासीं input output characteristics. For example, this is a logic circuit. It can be AND gate, it can be OR gate, ठीक है, it can be NAND gate. So you need to apply two levels. हिकिड़ी लेवल कहिड़ी हूंदी आहे हाई, लॉजिक हाई, ऐं ॿी लेवल कहिड़ी हूंदी आहे लॉजिक लो. लॉजिक हाई माना अराउंड 5 volts, अराउंड 4 volts, 4 to 5 somewhere, ठीक है, and low mana it has to be close, it has to be close to zero. What is the minimum voltage which the gate will accept as logic high? That voltage I call VIH. It is the input voltage, therefore we put I, and this H tells you that it is logic high. So input logic high. This is the minimum voltage which the gate will accept as logic high. घट में घट एतिरो वोल्टेज हूंदो त गेट छा चवंदो त इहो लॉजिक हाई आहे. ऐं VIL छा आहे, it is the input voltage logic low, पर that is the maximum voltage which is acceptable as logic low. माना हिन खां वोल्टेज वधीक हूंदो त उहो certainly guaranteed आहे त लॉजिक गेट विल कंसीडर इट एज लॉजिक हाई. ऐं जेकॾहिं वोल्टेज हिन खां लो हूंदो त वी आर सर्टेन दैट द गेट विल एक्सेप्ट इट एज लॉजिक लो. पर जेकॾहिं वोल्टेज VIL खां वधीक हूंदो ऐं VIH खां घटि हूंदो त छा थींदो, इट विल गो इनटू अनसर्टेनिटी. पाण खे पक कोन्हे हाणे त इहो वोल्टेज लॉजिक हाई कंसीडर थींदो या लॉजिक लो कंसीडर थींदो, स्विच ओपन थींदो या स्विच क्लोज रहंदो. If the voltage is between VIL and VIH, we are not sure how the circuit will behave. It will remain open or it will close. Is this discussion clear? Sir, last one repeat कजो. अच्छा, हाणे ॾिसो तव्हांखे हिते वोल्टेज अप्लाई करिणो आहे इनपुट ते. हाणे उहो वोल्टेज या त लॉजिक हाई कंसीडर थींदो या लॉजिक लो कंसीडर थींदो. हाणे जेकॾहिं इहो वोल्टेज जेकॾहिं हिन वैल्यू खां घटि हूंदो, VIL खां घटि हूंदो त पाण खे पक आहे त उहो लॉजिक लो कंसीडर थींदो. VIH खां मथे आहे त पाण खे पक आहे त उहो लॉजिक हाई कंसीडर थींदो. पर जेकॾहिं हिननि ॿिन्ही जे विच में किथे आहे त पाण खे पक कान्हे त ही सर्किट इन वोल्टेज खे लो कंसीडर कंदो या हाई कंसीडर कंदो. सर्किट क्लोज हूंदो या ओपन हूंदो, ठीकु आहे. स्विच ओपन थींदो या क्लोज थींदो तव्हांखे पक कान्हे त ही लॉजिक गेट कीअं बिहेव कंदो. ही अनसर्टेन रीजन आहे. तव्हां कॾहिं बि तव्हांखे वोल्टेज हिन रीजन में अप्लाई न करणु घुरिजे. यू शुड नेवर अप्लाई वोल्टेज विच इज बिटवीन दीज टू. या त हिन खां मथे हुजे या त हिन खां हेठि हुजे, या त VIL खां हेठि हुजे या VH खां मथे हुजे. सही आहे? ओके सर. अच्छा, हाणे विच में VIL ऐं VIH जे विच में छा आहे, अनसर्टेन रीजन आहे. एवरीवन इज क्लियर? यस सर. इहे थी विया इनपुट वोल्टेजेस. हाणे वरी पाण छा ॾिसंदासीं, आउटपुट वोल्टेजेस. हाणे आउटपुट वोल्टेज छा आहे, ही वोल्टेज आहे VOH. माना ॿ वोल्टेज हूंदा आउटपुट ते, हिकिड़ो हाई जे लाइ, ॿियो लो जे लाइ. हाणे हाई जे लाइ पाण खे पक आहे, गारंटी आहे. फॉर एग्जाम्पल ही गेट TTL टेक्नोलॉजी जो आहे त इहो छा कंदो त पाण खे हिकिड़ो गारंटीड वोल्टेज ॾींदो, चवंदो त हेतिरो वोल्टेज आउं ॾींदुसि टू रिप्रेज़ेंट लॉजिक हाई. So this minimum level of voltage is guaranteed. So this voltage is guaranteed when the logic gate is supposed to give logic high, and पाण खे guarantee आहे that when logic gate gives logic low, the voltage will not be more than VOL. Voltage will surely be less than VOL. जॾहिं logic gate
लो आउटपुट ॾींदो त वोल्टेज मैक्सिमम हेतिरो हूंदो ऐं जॾहिं लॉजिक हाई आउटपुट ॾींदो त मिनिमम वोल्टेज हेतिरो हूंदो. इहो गारंटीड वोल्टेजिस आहिनि. गारंटीड मिनिमम लेवल फॉर लॉजिक हाई, गारंटीड मैक्सिमम लेवल फॉर लॉजिक लो. सही है? ठीकु है? यस सर. तव्हां जॾहिं लॉजिक सर्किट ठाहींदा आहियो त तव्हां इलाही सारा लॉजिक गेट्स इस्तेमालु कंदा आहियो. हिकिड़े लॉजिक गेट जो आउटपुट ॿिए लॉजिक गेट जे इनपुट में वेंदो आहे. त हाणे पाण खे गारंटी करणो आहे, वी नीड टू मेक श्योर that this interface will work, this interconnection will work, they will understand each other. Mana, this logic gate will accept output from this gate as input correctly. त ही जेको लॉजिक हाई ॾींदो ही उनखे लॉजिक हाई कंसीडर कंदो, ही जेको लॉजिक लो ॾींदो ही उनखे लॉजिक लो कंसीडर कंदो. ही जेको डिफरेंस आहे बिटवीन VOH and VOL, this difference is bigger and this difference is smaller between VIH and VIL. This is the minimum voltage which is acceptable as logic high. This is the guaranteed voltage which this gate will give you while giving logic 1. And he logic 0 je lai maximum voltage hai which is acceptable as logic 0. And he logic 0 je lai maximum voltage hai jeko he circuit dindo. This circuit guarantees that I will not give you voltage greater than VOL while giving logic low. ठीक है? हाणे डिफरेंस केतिरो आहे ॿिन्ही में ॾिसो. VOH ऐं VIH में डिफरेंस केतिरो आहे? दिस ब्लू. ऐं VOL ऐं VIL में डिफरेंस केतिरो आहे? ग्रीन. दिस ग्रीन वन. ठीक है? VOH माइनस VIH ऐं ही छा आहे? VIL माइनस VOL. Clear? Sir? जी. Sir, but the middle region is uncertain region, na? Yes, of course. Okay. Now, you write on your copy, VOH बराबर आहे 4 volts. VOH छाजे बराबर आहे? 4 volts. 4 volts. VIH is 3.9. 3.9 आहे. त डिफरेंस केतिरो थियो? 0.1. 0.1. मिसाल तौर तव्हां हिन लॉजिक गेट जो आउटपुट यू आर अप्लाइंग टू द इनपुट ऑफ दिस लॉजिक गेट एंड यू आर अप्लाइंग लॉजिक हाई. यू आर अप्लाइंग लॉजिक हाई. त ही केतिरो पियो ॾे वोल्टेज? मिनिमम ॾे पियो 4 वोल्ट्स ॾे पियो. ऐं हिन खे केतिरो खपे थो? मिनिमम 3.9. 3.9. त हाणे सर्किट सही कम कंदो? जी सर. सर्किट सही कम कंदो? वाई? सर जेको हमके खपे होतो तो मिले पियो न. त माना सही कम कंदो न सर्किट? जी जी. ओके. सर्किट सही कम कंदो, पर सेफ मार्जिन केतिरो आहे? सेफ्टी मार्जिन केतिरो आहे? 0.1. 0.1 is the safety margin. 0.1. मिसाल तौर ही जेका तार आहे न, this connection, for example, this connection gets noise. ठीक है? noise हितां अचे थो, उॾामी हिन तार खे लॻे थो noise, and that noise creates minus 0.11 volts. note करियो, minus 0.11 volt. कॉपी ते लिखियो? Yes sir. अच्छा, हाणे उहो माइनस 0.11 वोल्ट्स हिन में ऐड थी वियो. आउटपुट केतिरो हो? VOH केतिरो हो? VOH केतिरो हो? 4. VOH was 4 मां 0.11 सब्ट्रैक्ट थी वियो, नॉइज अची वियो. 3.9. 3.89. 3.89. हाणे 3.89 VIH खां घटि आहे या वधीक आहे? घटि. Are you sure that this logic circuit will accept this as logic high? Maybe no sir. No, we are not sure. No sir. Noise margin. We are not sure because noise was greater than the noise margin. Yes sir.
Now there are two safety margins, two noise margins. Hikro, this one, bio, this one. Remember, noise can be negative, noise can be positive also. So Sam, your pointer arrow into pointer, red pointer. This one is the margin between low levels, means VIL is the maximum voltage which is acceptable as logic low to this circuit, and VOL is the maximum voltage given out by this circuit. So this is level is VOL and this level is VIL. So the margin is this much in the green. So yeah. So noise margin ketro thindo? हिन में 0.1 हो ना? Yes, sir. अच्छा. Now consider VIL is 1.2 volts. Write on your copy. VIL is 1.2. Yes, sir. Noted. And VOL is equal to 1 volt. 0.2 minus 0.2. No. Margin is always positive, na? 0.2 volts. 0.2. ठीक है ना? Sir, VOL 0.2 volts. margin है. This is the margin. यो 0.2 volts है. अच्छा. हाणे हिन साइड ते छा है? 0.2 ऐं ही छा है? 0.1. 1. इन्हनि ॿिन्ही मां मिनिमम वैल्यू कहिड़ी है? 0.1. So noise margin केतिरो थींदो? 0.1. So noise margin is 0.1. 0.1. ठीक है? Now noise margin example. For example, VIH is 2, VOH is 2.4, VIL is 0.8, VOL is 0.5. Noise margin is equal to the minimum value. 0.3. Between high value, difference between high values, difference between low values. Difference between high values 0.4. 0.4 and difference between low values is 0.3. 0.3. The smaller value kedi hai? 0.3. So 0.3 is the noise margin. This is data sheet. You know, whenever you purchase a circuit logic IC, you will find its number written, or you can search that number on Google. You will find its data sheet. This is data sheet. It's acha pe budai operating voltage. Supply voltage. Supply voltage. And it is telling you temperature range. It is telling you currents. Output current high. It is also showing you timing characteristics in nanoseconds. You can apply logic low to this gate. You can apply logic high to this gate. So yeah, logic high kanda ta cha thindo? You will apply some 4 volts or something. 4 volts apply kanda ta cha thindo? Current will go inside this. Acha, if you apply logic low voltage, then you will apply 0 volts or 1 volt, 0.5 volts. The low voltage hundo, the current will come out. Current will come out. So if you apply logic high, this circuit will behave as current sink. And if you apply logic low, then this circuit will behave as current source. Now this circuit can give you logic high and it can give you logic low. If it gives you logic high, it will give out some current because hite voltage high hondo ta kuch current hi dindo. Acha, if its output is low, acha thindo, it will sink certain current. Its output port will sink the current, and if its output is high, it will source the current, and if output is low, it will sink the current, isn't it? So if the input is high, its input port will sink the current. If output is high, its output port will source the current. Now this is the current which it can give out, and this is the current which it has to sink. So you are connecting output of this gate to the input of this gate, for example. So there are two gates. Left is giving output, right one is accepting it as input. The hita current ketro pyo che? IOH. Hina ke ketro khape pyo? IIH. IIH is the minimum current required. IOH is the current given out. How many gates you can connect to the output of this gate? So 3 gates? No, 2 gates. Value of IIH. It depends on the values of IOH and IIH. For example, this is the current. This current is 1 milliampere.
For example, this current is 1 milliampere. So IOH is equal to 1 milliampere, right? On your copy. Sir, repeat kyo. 1 IO milliamp. हाँ 1 milliampere. IOH बराबर है 1 milliampere. 1 milliampere. Yes, sir. And लिखियो. IIH is 0.1 milliampere. Yes, sir. Mana छा थींदी? Mana इहा that this logic gate, when it gives logic high output, the maximum current that you can draw from it is 1 milliampere. तव्हां वधि में वधि इन मां 1 milliampere करंट ड्रॉ करे सघो था. ही तव्हांखे 1 milliampere खां वधीक करंट नथो ॾेई सघे आउटपुट ते जॾहिं लॉजिक हाई आहे. ऐं ही हिन गेट खे इनपुट तव्हां ॾियो पिया ऐं हिन खे छा खपे थो, करंट केतिरो खपे थो? मिनिमम 0.1. मिनिमम 0.1 खपे थो टू एक्सेप्ट द इनपुट एज लॉजिक हाई. त हाणे छा थींदो? तव्हां केतिरा गेट्स ॾेई सघो था हिन जे आउटपुट ते? सर 10. 10. छाकाणि त हिन वटि आहे 1 मिलीएम्पियर ऐं हिन खे खपे थो 0.1 हिकिड़े गेट खे. त तव्हां केतिरा ॾेई सघो था? 1 डिवाइडेड बाय 0.1 माना मैक्सिमम 10. 10 gates. Maximum how many gates this gate can drive? This gate can drive maximum 10. 10. इहो कीअं मालूम थींदो? You will divide the output current by the IIH. IIH. So remember that these two have to be the gates of the same type. The he TTL है, the Yes, he sir. TTL है. He CMOS है, the he CMOS है. So why same? Because the gates of the same type are guaranteed to work if you connect them together. If they are not same type, then they are not guaranteed to work correctly. So what you will do, then तव्हांखे जेकॾहिं ॾिसणो आहे त तव्हांजो type A gate will successfully work with type B gate. If you want to make sure, त पोइ छा थींदो? You need to see its electrical characteristics like VOH, VIH, VOL, VIL. Like VOH should be greater than VIH. Yes, sir. VOL must be less than VIL. VOH of type A should be greater than VIH of type B. See, for example, this is a gate from logic family A and this is a gate from logic family B. So they are two different families. Then you need to make sure that VOH from this logic family is higher than VIH from this family. If they are from the same family, then it is guaranteed that VOH will be greater than VIH. If both are TTL, they will surely work. Okay? But if they are from different families, then you need to see the data sheet. Data sheet में तव्हांखे ख़बर पवंदी त हिन जो VOH केतिरो आहे, हिन जो VIH केतिरो आहे. You need to see data sheet of both circuits. And you need to make sure that VOL must be less than VIL and VOH must be greater than VIH. सही है? Sir, अगर family same है तभी यह condition. No. Family same है, तो this condition will surely comply. This Yes, sir. condition will be surely satisfied if the families are same. But if you are using gates of different technologies, ही gate मुख्तलिफ technology जो है, ही मुख्तलिफ technology जो है, पोइ it is not guaranteed. पोइ तव्हांखे छा करणो पवंदो? ॿिन्ही जूं data sheets खणणी पवंदियूं. Yes, sir. So if it is a gate of the same family, same type, then surely VOH will be greater than VIH and VOL will be less than VIL. Surely. थींदो हलियो तव्हांजो fan out. Fan out छा हूंदो आहे? The number of gates that output of this gate can drive how many inputs. It is called fan out. How many inputs this can drive. ठीक है? कीअं थींदो? तव्हांखे 4 वैल्यूज़ खपनि IIH, IOH, IIL, IOL. जेकॾहिं लॉजिक लो आहे, if this gate is giving low output, then छा थींदो? ऐं तव्हां इहो हिन खे अप्लाई करियो था त what will happen? Current will go from this gate to this gate, from right to left, because here voltage is low. Here this is supposed to sink the current. ही जेकॾहिं लो आहे that this is supposed to sink the current. If it has to sink the current, the mana current will flow this way from right to left. तव्हांखे ॾिसणो आहे त हाई में रेशो केतिरो आहे ऐं लो में रेशो केतिरो आहे. लॉजिक हाई जा करंट्स ऐं लॉजिक लो जा करंट्स.
IIH is 20 microampere, IOH is 400 microampere. The IOH divided by IIH, 400 microampere divided by 20 microampere. जवाब केतिरो आयो 20 ऐं IOL केतिरो आहे 8 मिलीएम्पियर. 8 मिलीएम्पियर माना 8000 माइक्रोएम्पियर. 8000 माइक्रोएम्पियर divided by IIL. IIL छा आहे 400. 8000 divided by 400 केतिरो थियो 20. So both this value is 20, this value is also 20. So answer is 20. Means you can connect 20 gates of the same type on the output of inputs. Yeah, of course 20 gates, because normally you will apply this output to one input of the gate usually, or whatever you like to say how many inputs this can drive. So output of this gate can drive how many inputs? Sir, 20. In this particular example, it can drive 20 inputs. So this you can take and apply at the same time to 20 inputs. He high te apply the tho and low te apply the tho. So there are two ratios. And जेको बिनी मां नंढो हूंदो उहा वैल्यू तव्हां रखंदा. ठीकु आहे. फैन आउट सम्झ में अची वियो? Yes, sir. Fan out is the number of inputs that you can connect to the output of a gate. That is fan out. Acha, fan in क्या होंदो है? Number of inputs to a gate. If a gate has two inputs, means its fan in is 2. If a gate has 3 inputs, then the fan in is 3. If, for example, there is exclusive OR gate of 4 inputs, the उनजो fan in केतिरो थींदो 4. Okay, so number of inputs a technology can handle. So if you increase the number of inputs to a gate, noise margin will reduce and the gate will become slow. What is this one? Sir, CMOS NAND gate. हाणे हिनखे केतिरा inputs आहिनि? Sir, 2. Now if I want a 3 input NAND gate, what I need to do? Anyone? Sir, repeat the Sir, question. repeat the question. If I want to design 3 input CMOS NAND gate, then what can I do? We'll add one more transistor. Of course, you will put one more transistor here. So there are 2 transistors in parallel. You will make 3 transistors in parallel. And there are 2 transistors in series. So you will put 3 transistors in series. So 3 PMOS and 3 NMOS. So if there are 3 NMOS, that's how there will be more current. There will be more current coming into this. So yeah, and there will be more voltage drop here because there will be 3 transistors in series. So there will be more voltage here. So VOL will increase. So noise margin will decrease. Noise margin will decrease and the circuit will become slow. So circuit operation will become slow and noise margin will also reduce. ठीक है? गल केड़ी है? Noise margin should be bigger. Noise margin is the safety margin. Safety margin should be bigger. So this margin is good when the number of inputs is small. If number of inputs is large, the noise margin reduces. Now fan in chai, the number of inputs to a gate is called fan in. Fan in. ठीक है? जी. Sir, तव्हां last point कहिड़ी ॿुधाई त जॾहिं inputs increase थींदा त noise margin reduce थींदो. हाँ, माना तव्हां जेकॾहिं हिते हिकिड़ो गेट ठाहिण चाहियो था जंहिंमें 3 inputs हुजनि त तव्हां जी छा सर. कंदा? तव्हां ट्रांजिस्टर जो तादाद वधाईंदा. Add कंदासीं. Yes, sir. हिन में ट्रांजिस्टर वधंदा, 2 ट्रांजिस्टर पैरेलल में लॻी वेंदा त करंट वधंदो. 2 पाथ पैरेलल लॻी वेंदा त हिते करंट वधंदो. हिते करंट वधंदो त हिते वोल्टेज ड्रॉप वधंदो हिन ते. ऐं हिते जेको VOL आहे उहो वॾो थी वेंदो. VOL जेतिरो नंढड़ो हुजे ओतिरो सुठो आहे. VOL वॾो थींदो त नॉइज़ मार्जिन घटिजी वेंदो. VOL ओयो ही आहे. VOL मथे ईंदो त नॉइज़ मार्जिन घटिजी वेंदो. ठीकु आहे. वरी तव्हां छा कंदा? तव्हांखे 4 इनपुट गेट खपे. 4 इनपुट गेट खपे त छा थींदो? वरी तव्हां 4 ट्रांजिस्टर हीअं पैरेलल में लॻाईंदा ऐं हीअं 4 ट्रांजिस्टर सीरीज़ में लॻाईंदा
त ही जेको करंट आहे इलाही वॾो थी वेंदो, हिते वोल्टेज ड्रॉप वॾो थी वेंदो, त हिते VOL अञा वॾो थी वेंदो, त नॉइज़ मार्जिन तव्हांजो घटिजंदो वेंदो। नॉइज़ मार्जिन तव्हांजो घटिजंदो वेंदो। हा, जेतिरो वॾो गेट ठाहींदा, इलाही सारनि इनपुट्स जो गेट ठाहींदा, त नॉइज़ मार्जिन ओतिरो घटिजंदो वेंदो। ओके सर। ऐं सर्किट स्लो बि थींदो। अच्छा, तो सर पाण इनपुट असांखे घटि ॾियणु खपे, माना हा, नंबर माना ऑफ इनपुट। पाण कोशिशि कंदा आहियूं त वॾो गेट न ठाहियूं, या पाण छा कंदा आहियूं त टेक्नोलॉजी खे इम्प्रूव करण जी कोशिशि कंदा आहियूं विथ टाइम। माना छा कंदा आहियूं, नॉइज़ मार्जिन खे वधाए सघूं ऐं इनपुट्स खे बि वधाए सघूं। त टेक्नोलॉजी वक़्त सां इम्प्रूव थी आहे। पुराणी टेक्नोलॉजी एतिरी सुठी कोन हुई, हाणे नई टेक्नोलॉजी बहितर आहे, उन में नॉइज़ मार्जिन बि सुठो आहे ऐं नंबर ऑफ इनपुट्स बि वधीक आहिनि। यस सर। मिसाल तौरु तव्हां पैरिटी जनरेशन पढ़ी आहे न? यस सर। पैरिटी जनरेशन में छा थींदो आहे, तव्हांखे 7 बिट एक्सक्लूसिव ऑर खपंदो आहे। यस सर। ईअं हूंदो आहे न? रिसीवर। यस सर। हा, 7 बिट्स एक्सक्लूसिव ऑर माना 7 इनपुट खपनि गेट खे। 7 इज़ वेरी लार्ज नंबर। त पुराणी टेक्नोलॉजी में इहो पॉसिबल कोन हो। ठीकु आहे, पुराणी टेक्नोलॉजी में ईअं करण सां सर्किट स्लो थी वेंदो हो इलाही, ऐं नॉइज़ मार्जिन इलाही घटिजी वेंदो हो। हाणे बेटर टेक्नोलॉजी आहे, सुठो नॉइज़ मार्जिन मिले थो विथ 7 इनपुट्स। जी सर। हाणे ॿ टेक्नोलॉजीज़ के बि ॿ टेक्नोलॉजीज़ तव्हांखे कंपेयर करणियूं आहिनि, त तव्हां छा कंदा? तव्हां उन जो नॉइज़ मार्जिन कंपेयर कंदा। हिकिड़ी टेक्नोलॉजी नॉइज़ मार्जिन घटि ॾींदी हूंदी, ॿी टेक्नोलॉजी वधीक ॾींदी हूंदी। हिकिड़ी टेक्नोलॉजी फैन इन इलाही ॾींदी हूंदी, ॿी टेक्नोलॉजी फैन इन घटि ॾींदी हूंदी। हिकिड़ी टेक्नोलॉजी फैन आउट घटि ॾींदी हूंदी, ॿी टेक्नोलॉजी फैन आउट वधीक ॾींदी हूंदी। हिकिड़ी टेक्नोलॉजी स्लो हूंदी, ॿी टेक्नोलॉजी फास्ट हूंदी। हिकिड़ी टेक्नोलॉजी में पावर डिसिपेशन घटि हूंदो, ॿी टेक्नोलॉजी में पावर डिसिपेशन वधीक हूंदो। अच्छा, भला पावर डिसिपेशन जेकॾहिं इलाही आहे त छा थींदो? पावर डिसिपेशन घटि हुजे या वधीक हुजे? सर घटि हुजे। घटि हुजे। वधीक हुजण सां छा थींदो आहे? सर लॉसेस। ॾिसो न, तव्हांजे मोबाइल जी बैटरी डाउन थींदी जल्दी, तव्हांजे मोबाइल जी बैटरी जल्दी डाउन थींदी न, पावर डिसिपेशन घणो हूंदो त। यस सर। ठीकु आहे, त पावर डिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंड हेल्ड डिवाइसिस। जेके पोर्टेबल डिवाइसिस हूंदियूं आहिनि न, उहे बैटरी ते हलंदियूं आहिनि, त तव्हांखे बैटरी बार बार चार्ज करणी पवंदी इफ पावर डिसिपेशन इज़ हाई। ॿियो नुक़सानु कहिड़ो आहे पावर डिसिपेशन जो? सर एनर्जी। सर लैपटॉप। ॿियो नुक़सानु आहे त तव्हांजो मोबाइल गरम थींदो इलाही। जेकॾहिं हुन में पावर डिसिपेशन हाई हूंदी त छा थींदो? गरम इलाही थींदो। यस सर। तव्हांखे कहिड़ो मोबाइल वणंदो, जेको इलाही गरम थो थिए या जेको थोरो गरम थो थिए? सर जेको थोरो गरम थिए। त पावर डिसिपेशन जा नुक़सान आहिनि, बैटरी डाउन थींदी जल्दी ऐं तव्हांजो मोबाइल गरम इलाही थींदो, ऐं गरम थींदो त हुनजे ख़राबु थियण जा चांसिस बि इलाही हूंदा। हिकिड़े जेको मोबाइल फ़ोन में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हूंदा आहिनि, बिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स हूंदा आहिनि, इलाही सारा लॉजिक गेट्स हूंदा आहिनि किरोड़े। त पाण चाहींदा आहियूं त अहिड़ी टेक्नोलॉजी ठाहियूं जंहिंमें लॉजिक गेट जी पावर डिसिपेशन तमामु थोरी हुजे। सही आहे? एवरीथिंग क्लियर? यस सर। Okay, so our time is over. We can discuss tomorrow more. We'll discuss more, like timing characteristics tomorrow. ओके सर। Okay, bye.